Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there's a flat closing. Nifty was up by 33 points. The close was above 20,100 level. So even though it registered a new all-time high level at 20,167, there was a slight selling in the market. So that if you look at the candlestick pattern, that was a red color candle, mainly suggesting that the close was below the open. So if I look at the chart pattern, the directional trend has not changed. I do believe this momentum will continue and we should be heading for 20,200 and 20,400 over the next week. Supports on the downside has now come to 19,800 level, and major reversal will be seen when 19,200 is broken. So net the bias is positive. Declines during the day or maybe on during the next week also some corrections if do comes close to 20,000, 19,800 level, that should be viewed as a buying opportunity. So that's the view for the Nifty. If we look at the Bank Nifty, so Bank Nifty, we are closely watching the levels of 46,000 level. As and when we see a weekly close above 46,000 level and it moves up 100, 200 points on the upside, then that confirmation will come where Bank Nifty can easily scale up to 50,000 levels over the period of time. It won't be like on an immediate basis, but the view after 46,000 open up for 50,000 level on the higher side. So we are extremely bullish on the Bank Nifty. It's just we need some kind of confirmation whenever it closes above. The confirmation will come when it closes above the 46,000 level on the weekly. That too with the good volumes. So these are the levels. These are the points which need to take care of. So the view for both the Nifty and Bank Nifty is positive. Nifty should be 20,400 should be the immediate upside is what I believe. Buy on decline strategy should be applied for both the indices. So besides this, yesterday we saw that the PSU Bank, metals and realty are the three sectors which again has seen the momentum on the higher side. So whenever the market is sideways or corrections, we do witness a correction. The buying should be seen in done in this particular sector. Beside that, EID was one stock which is looking very strong on charts. It has given a very good reversal. So in the short term, which is the time frame of 2 to 3 months, I believe the EID Perry can test the levels of 675. So any decline in the EID Perry should be viewed as a buying opportunity. And yesterday we also booked the Hindalco trade, which we had initiated on 17th July. We made a profits of close 15% in the Hindalco. So Hindalco, anybody who are holding the position since 445 levels can book the partial profit at current levels, and then we can review later. Coming to the derivatives data, so there was the in Nifty future there was the long built up to the tune of 7%. The put call ratio has declined from 1.25 to 1.04, and the major writing in the call writing was seen at 20,200 and 20,300. That will be resistance, and put writing was seen at 20,000. That will be support. In Bank Nifty, we saw the short covering to the tune of minus 6.21%. The PCR is also declined from 1.35 to 0.97% ratio. The major writing was seen as call writing was seen as 46,100. So this will be the resistance, and 46,000 put writing. So this will be the support. So the derivatives data is it's not suggesting any clear directional trend, but then technically I'm pretty convinced that at lower levels again the buying will come, and we should be heading for 20,400, and Bank Nifty above 46,000. There will be a fresh triggers in the sectors. So that's the technical view. And hand over to Vishal sir for more research updates. Thank you. Yeah, sorry. Good morning. To start off with a couple of on a fundamental side, first is on cement. If you look at cement, and the industry has taken a second price hike in the last 15 odd days, and the second price hike has come mainly in the eastern part of India, and this is pretty positive for the players who are operating. Now, primarily the players who are focused on the east part of India include the like of Dalmia Bharat, Nuvoco, and even to some extent Birla Corp.
Next is on construction stock. So, I mean, they have done pretty well in the last 6 to 8 months. But I think despite a strong stock price appreciation, there is still a couple of construction name where the valuation comfort remain. So, in terms of recommendation, we still think NCC and PNC Infratech, where there is a valuation comfort, even like the likes of PNC, which is still trading at its historical averages. So that remain our two topics in the construction space. Next, if you move to other side, like Infosys has entered into an agreement MOU with a global company to provide an enhanced digital experience along with the modernization of business operation. This deal, if fructify, will contribute roughly like a 0.5% to the top line of Infosys, and it's positive. Now, next is on Intellect Design Arena. Company has announced that AFC Commercial Bank has chosen its IGCB's core banking offering, which is Intellect Design Core modernized to banking operation. And the partnership will Intellect will enable AFC Commercial Bank to deliver a seamless and personalized banking experience. And the quantum of the deal is not known, but however, it's positive for Intellect Design Arena. Next, if you look at on DCW, with the impact could be positive, is expected to be positive, wherein like the Office of Commissioner of Customs. So they have disposed the matter, which is like earlier matter they have imposed on them, which basically was on paying the higher customs duty, and they have reversed that particular order which they have passed, and the claim was to the tune of around 54 odd crores. And this is positive on DCW because on an annual basis, company has a PAT which is like roughly 150 to 200 odd crores. So this is roughly like around 30 to 25 to 30 odd% to its PAT number. Next is on ME Organics. So the impact is expected to be positive, wherein like the leading global aerospace and technology company headquartered in UAE has announced a broadening of its development and manufacturing partnership with Indian industrial conglomerate, which includes sorry, this is I'm talking about Bharat Forge. So this is impact is positive on Bharat Forge, wherein like the Paramount, the leading global aerospace and technology company headquartered in UAE, they have announced a partnership with the likes of Bharat Forge and Kalyani Strategic System. And if you look at Kalyani Strategic System has to date resulted in a successful development of production of large volume of locally made KM4 armored vehicle. And this probably like the tie-up is pretty positive in terms of like because in defense theme there has been export has been one of the element, and Bharat Forge is one of the best beneficiary of this particular theme in amongst the most of the stocks that in defense sector. Next is on ME Organics, where we expected impact to be neutral on the stock, wherein like the Baba Advanced Material Limited, a wholly owned subsidiary, has incorporated under the provision of Companies Act. Now, Baba Advanced Material on commencement of its business shall belong to chemicals and specialty chemical industry. And I mean, total investment that has been infused in this is roughly like 1 lakh odd for this particular acquisition. Then last thing from my side is on Lemon Tree. So hotel chain Lemon Tree has signed a license agreement for the 2 new property in Junagadh, Gujarat, Nepal, and under the brand name of Lemon Tree Hotel and Lemon Tree Resort, respectively. Now, Lemon Tree Hotel in Junagadh is expected to be operational by FY25, and the Tiger Land Safari, which is in the Nepal, is expected to be operational by FY24. This is actually, if you look at, in line with the company's guidance of asset-light inventory, and which will drive operating margin expansion. Now, if you look at from our recommendation, we have a buy rating on the stock, and our target price is 110. Yeah, so that's all. And I mean, this stock we have recently, I mean, like upgraded with the target price post our Q2 earnings. That is Lemon Tree. So that's all from my side, and I'll hand it to sir for further updates. Yeah, over to you. Yeah, good morning, team. Yesterday we saw PSU banks starting to rally. We like Union Bank, Canara Bank, Bank of Baroda, Bank of India, PNB, Central Bank, and even few other PSU stocks are looking good. NMDC, GAIL, NLC, NTPC, HAL and BEL. But other defense PSU, we are cautious at this point of time. So one has to be a bit careful. There can be change in the constituents of rally. NMDC has hiked the price of fine and lump ore by 300 per ton. Lump ore prices
is 4,950. Fines prices is 4,210. Everything is per ton. Alchem Lab, yesterday there was an income tax survey. Now, so they have also confirmed to the exchanges, yes, the income tax survey has happened, which is slightly negative for Alchem Labs. Patel Engineering joint venture declared as the lowest bidder for 250 crores irrigation project. Patel Engineering share will be almost 100 crore. The project is in Maharashtra, Krishna Valley Development. Yesterday there were multiple interviews and it was very interesting. So now let me start with saying that first Narayana Hirdalaya, they came out and said that no, they will change their name to Narayana. So NH will be rebranded. It will be Narayana. And all brand will be rebranded as Narayana Insurance, Narayana Heart Care, like that, so that they are trying to be brand cautious. Now, and this is very aggressive. They are saying they will come into insurance also. So what is benefit is today's health insurance doesn't cover many things. So they being in hospital business, they said, we understand this market better, so we will get into it. So previously there was a Jupiter Life IPO which came. So that time in that IPO, I was studying one material which said number of beds each hospital has. Apollo has the highest bed in the hospital listed space. Second highest is operated by Narayana Health. So how much bed Narayana Health operates? It is 6,000 beds. And the capacity utilization is the lowest in the industry. Average operates at 60%, Narayana Hirdalaya is at 43%. If you take revenue per bed, Narayana Hirdalaya is at the lowest. Now, if you take ROE, it is the highest. Return on equity, Narayana Hirdalaya is the highest. And in every metrics, there is a huge gap and there can be an improvement. Why the capacity utilization is lowest? Because these are new hospitals. As the hospital matures, they can go to 65%. So that means they have a growth of 50% in the next 2 years. So I think the stock is trading around 1,000. It has a potential to give 50% return in next 2 years. That is a huge return if you ask me. So I think Narayana Hirdalaya is a thing to watch out for. And in health insurance, there was an interview from a health insurance company which talked about the Ahmedabad, in Gujarat, the 100 hospitals have entered strike, boycotting all the health insurance. So that has now been solved, is what they are saying. But due to which few other data have come. Maybe I will share it at a later point of time. Grasim is set to launch paint business under the brand name Brilla Opus. It will be launched in Q4 FY24 with 10,000 crore is the investment. So that is something very positive for Grasim, but it is very negative for other players. Mahindra Holiday has signed a MOU with the government of Uttarakhand to establish and develop Club Mahindra Resort. And the investment in next few years will be 1,000 crores. And the stock post this announcement, it saw a very good rally. Larsen, L&T and BAE Systems, they have teamed up to bring BVS10 all-terrain vehicle to India under the Make in India program. Very positive for Larsen and Make in India scheme. Insecticide, India gets patent from government for novel amide compound for 20 years. Positive for them.
And in DCW, they have 10 years of custom duty thing has been closed. No, that comes to 54 crores. So that is going to be positive for DCW. Yesterday, the stock was up 16%. With that, over to you, team. थैंक यू सर गुड मॉर्निंग एवरीवन अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं फर्स्ट अपडेट है इन्फोसिस के ऊपर इन्फोसिस ने एंटर किया है एमओयू ग्लोबल कंपनी के साथ जो प्रोवाइड करेंगी उनका इनहांस डिजिटल एक्सपीरियंस करने के लिए और उसके अलावा मॉडर्नाइजेशन और बिजनेस ऑपरेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगी लेवरेजिंग जो इन्फोसिस का प्लेटफॉर्म है एआई सॉल्यूशन उसके ऊपर भी ध्यान कि टोटल क्लाइंट टारगेट है उनका स्पेंड ओवर 15 इयर्स में एस्टिमेटेड यूएसडी 1.5 बिलियन ये बेसिकली सब्जेक्ट टू पार्टीज होगा एंटरिंग मास्टर अग्रीमेंट और ये जो डील है वो कंट्रीब्यूट करेंगे अराउंड $100 100 मिलियन से लेके टॉप लाइन अराउंड 0.55% टॉप लाइन है नेक्स्ट अपडेट है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना के ऊपर कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो एएफसी कमर्शियल बैंक उन्होंने चूज किया है कोर बैंकिंग ऑफरिंग में इंटेलेक्चुअल डिजिटल कोर मॉडर्नाइज इट्स बैंकिंग ऑपरेशन के लिए और बैंक जो है वो हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी एप कर रही है लिवरेज कट करके एज टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्म करेंगी बैंकिंग एक्सपीरियंस ये पार्टनरशिप बेसिकली एएफसी जो कमर्शियल बैंक है उसमें वो डिलीवर करेंगे सीमलेस एंड पर्सनलाइज बैंकिंग एक्सपीरियंस कस्टमर्स को और ये क्वांटम डील की जो है वो अभी भी अननोन है और बट ये कंपनी के लिए अच्छा है डील विनिंग रणजी एंटरटेनमेंट कंपनी है कंपनी ने सर्व किया है अपील ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड जो चैलेंज कर रहा है ऑर्डर एनसीएलटी को जो रिकॉर्ड मर्ज विद सोनी था उसके लिए और ये बेसिकली बिलीफ है कि ये डिले होगा मर्जर टाइमलाइन बट कितना होगा उसका इम्पैक्ट वो कंपनी के ऊपर वो एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है देन नेक्स्ट अपडेट है सीमेंट सेक्टर के ऊपर सीमेंट सेक्टर में जो प्राइसेस हाइक है सेकेंड टाइम लास्ट 15 डेज में हो ही गई है सेकेंड हाइक जो है मेनली ईस्टर्न रीजन और अदर रीजन्स में है मोरर लेस सेम ही है और ये अच्छा है सीमेंट प्लेयर्स के लिए जो ईस्ट में लोकेटेड है उसमें एक डालमिया भारत है नोवोको है और बिरला कॉर्प है नेक्स्ट अपडेट है कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो स्टॉक्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा खासा लास्ट 6 to 8 मंथ्स में स्टॉक की प्राइस इतना बढ़ने के बावजूद भी उनमें कंफर्ट जो है वैल्यूएशन वाइज हम लोग देखें तो वो कंफर्ट है ही उसमें हम लोग देखें तो वैल्यूएशन ऑन प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिस पे करे तो 1+SD है LNT एंड SG इंफ्रा में उसके अलावा NCCA PNC इंफ्राटेक है वो करंटली ट्रेड कर रहे बिलो +1 STD डेविएशन के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर एंड प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिस पे PNC एवरेज है अराउंड लास्ट 10 इयर्स के और ओवरऑल हम लोग देखें तो ये सेगमेंट में टॉपिक्स है NCC एंड PNC इंफ्राटेक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से देन DSW जो कंपनी है मतलब ऑफिस ऑफ द कमीशन कस्टमर्स है क्यूट्रिकॉन वाइड उन्होंने ऑर्डर डेट की है सितंबर 11 2020 में जो डिस्पोज करेंगे मैटर फेवर ऑफ DSW लिमिटेड जो वेरियस शो कॉज नोटिस इशू की थी कंपनी को ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन कस्टम्स ने Basically, connection and upgrade beneficiary eliminate synthetic rutile export various periods में था जो beginning हुआ था जून 2013 से लेके जून 2022 तक हर कंपनी ने शो कॉज जो है उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी अंडर चैप्टर 26 कस्टमर टैरिफ एक्ट 1975 जो है वो डिमांडेड था और रिकवर इंटरेस्ट के साथ रिस्पेक्ट टू उनका जो अपग्रेडेड बेनिफिशियरी एलिमिनेट सिंथेटिक रूटल था और ये जो क्लेम है वो उसकी जो अमाउंट है रुपीज अराउंड 54 ऑड करोड़ देन नेक्स्ट अपडेट है क्लीन साइंस के ऊपर क्लीन साइंस जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उन्होंने सब्सक्रिप्शन ऑफ राइट इशू है क्लीन फिनो केमिकल लिमिटेड उसकी जो अमाउंट है 17 करोड़ की है और
होली ओन सब्सिडरी कंपनी की, और ये प्रोसेस करेंगी और सेटअप करेंगी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में, और वो मेकिंग करेंगी HAL सीरीज। और ये एडिशनली कैपिटल जो है वो यूज होगा फंडिंग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। और क्लीन साइंस ने लॉन्च किया 2 ग्रेड्स ऑफ HALs दैट हिंड्रेड अमाइन लाइट स्टेबलाइजर्स नवंबर 2022 में। और ये जो हिंड्रेड एमाइन लाइट स्टेबलाइजर है 770, वो कैटरिंग करेंगे डोमेस्टिक मार्केट। और ये जो सेम मॉडल है 701 का 701 का, वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए होगा। और ये इंस्टॉल कैपेसिटी है 2 प्रोडक्ट्स की 2 KTP से लेके कंपनी का प्लान है कि वो एक्सपांड करेंगे अनदर 15 KTPA दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट अपडेट है अमी ऑर्गेनिक्स के ऊपर। बाबा एडवांस मटेरियल लिमिटेड जो उनकी होली ओन सब्सिडरी है कंपनी की अमी ऑर्गेनिक्स की, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है कि सितंबर 13 2023 को अंडर प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 बाबा एडवांस मटेरियल लिमिटेड का वो कमेंसमेंट करेंगे। उनका जो बिजनेस है बिलोंग करता है केमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में। कंपनी ने मेन ऑब्जेक्ट था मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल का, उसमें इंक्लूडिंग स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स एंड अदर अलाइड बिजनेस था। और ये सेम इनलाइन बिजनेस लिस्टेड एंटिटी में है। तो ये कैश कंसिडर करेंगे तो कुछ अराउंड 1 लाख फॉर द एक्विजिशन के लिए है। द नेक्स्ट अपडेट है भारत फोर्ज के ऊपर। पैरामाउंट लीडिंग ग्लोबल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर UAE में है। उन्होंने अनाउंस किया कि वो ब्रॉडनिंग करेंगे उनका डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप विद इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट भारत फोर्ज के साथ और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, जो बेसिकली प्रोड्यूस करेंगे वाइडर रेंज व्हीकल्स इंडिया में और पैरामाउंट ग्लोबल कस्टमर्स के लिए। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप होगा बिटवीन पैरामाउंट एंड इंडियन बेस्ड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो भारत फोर्ज लिमिटेड है उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के साथ। और ये सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन लार्ज वॉल्यूम्स में लोकली मेड KM4 आर्मोर्ड व्हीकल है इंडियन आर्मी के लिए। और ये कंटिन्यूटिंग और ग्रोइंग पार्टनरशिप होगी पैरामाउंट सब्सटेंशियल्स। इनफैक्ट ये वर्ल्ड कंसिडर करेंगे इंडिया को रेडी टू बी मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल फॉर ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट है भारत फौज के लिए। द नेक्स्ट अपडेट है लेमन ट्री के ऊपर। होटल चेन है, उन्होंने साइन किया लाइसेंस अग्रीमेंट क्यों 2 नए प्रोजेक्ट जूनागढ़ गुजरात एंड चितवन में नेपाल में अंडर ब्रांड लेमन ट्री के और लेमन ट्री रिसोर्ट के। और लेमन ट्री होटल जूनागढ़ में है वो एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेशनल फाइनेंशियल ईयर 25 में हो सकता है। और टाइगरलैंड सफारी है रिसोर्ट चितवन में, वो नेपाल में एक्सपेक्टेड है कि वो ऑपरेशनल होगा फाइनेंशियल ईयर 24 में। ये इनलाइन है मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार। और असेट लाइट इन्वेंट्री एडिशनल है जो ड्राइव ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंशन करती है। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है 110 टारगेट प्राइस है। स्टॉक अभी टारगेट प्राइस के ऊपर है, तो Q2 अर्निंग के बाद टारगेट प्राइस अपडेट होगी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से। इसके अलावा हम लोग कल देखे तो मार्केट में PSU बैंक्स में रैली देखी गई है। तो उसमें यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, कैनरा बैंक है। ये स्टॉक को आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो PSU स्टॉक्स है NMDC है, BAL है, HL है, NHPC है, ये स्टॉक को देख सकते हो। HL BL जो डिफेंस कंपनी है, उसके अलावा जो अदर डिफेंस है उसके ऊपर कॉशियस होना है। देन जो NMDC है उन्होंने जो आया मतलब उनकी जो प्राइस है आयरन ओर की वो इंक्रीज हुए 300 रुपीज पर टन। लंप और प्राइस है वो फिक्स है 4950 एंड उनकी जो फाइन्स है उसकी जो प्राइस है 4210। देन अल्केम लैब है, उन्होंने एक्सचेंज पे अपडेट किया कि उनके इनकम टैक्स की सर्वे हुआ तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी के लिए। पटेल इंजीनियरिंग जो कंपनी है उन्होंने जॉइंट वेंचर की किया है, उसमें लोएस्ट बिडिंग की है। और उसके जो उनके पास 100 करोड़ शेयर्स होंगे। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ होगा कृष्ण वैली जो डेवलपमेंट के लिए। और देन इंटरव्यू हम लोगों ने कल देखे, उसमें एक नारायण हृदयालय है, उन्होंने बोला है कि उनका जो नेम है वो चेंज करेंगे नारायणा। तो बेसिकली वो मोर फोकस करेंगे ब्रांड पे, जैसे कि वो नारायणा इंश्योरेंस, नारायणा हार्ट केयर लाइक, तो फोकस होगा ब्रांड पे। और वो अभी अग्रेसिवली इंश्योरेंस सेक्टर में आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो बीइंग अ हॉस्पिटल बिजनेस उनको ज्यादा बेटर नॉलेज है। तो
और हम लोग ओवरऑल देखें डेटा वाइज तो नंबर ऑफ बेड है सबसे ज्यादा अपोलो हॉस्पिटल में हाईएस्ट, उसके बाद नारायण हेल्थ में है 6000 जो ऑपरेटिव है। रेवेन्यू पर बेड देखे तो वो लोएस्ट है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो नारायण हृदयालय का हाईएस्ट है। एवरी मैट्रिक्स में ह्यूज गैप है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ही ज्यादा स्कोप है। और ग्रोथ देखें हम लोग तो 50% हो सकता है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। अभी जो स्टॉक चल रहा है वो 1000 रुपीज है। 15% रिटर्न 50% रिटर्न नेक्स्ट 2 ईयर्स में आ सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अहमदाबाद में उनके कुछ 100 हॉस्पिटल से उन्होंने स्ट्राइक किया था, तो वो भी सॉल्व हुआ है। तो ओवरऑल देखे तो हम लोग नारायण हृदयालय को नेक्स्ट 2 ईयर्स के टाइम फ्रेम से आप वॉच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है ग्रासिम के ऊपर। ग्रासिम लॉन्च करी है उनका पेंट बिजनेस Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में अराउंड 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। ग्रासिम के लिए पॉजिटिव है, बट बाकी पेंट कंपनी के लिए थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। MHRL है महिंद्रा ऑलरेडी रिसोर्ट, उन्होंने MOU साइन किया है उत्तराखंड में गवर्नमेंट के साथ, तो इसके बाद स्टॉक में रैली देखी गई है। देन L&T एंड BI सिस्टम है, उन्होंने टीम अप किया है जो बेसिकली ऑल ट्रेंड व्हीकल अंडर मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर करेंगे, तो L&T के लिए पॉजिटिव है। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.